Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's me Mubashir Ahmad and today it's second year's class. Today we are going to start yet another unit and that is a poem. And the title of the poem is Once Upon a Time, written by Gabriel Okara. This is the name of the poet and he has authored this particular poem Once Upon a Time. Now first of all, it is very much pertinent to mention that before starting any poem, it's very much important to realize what is the meaning of the title. The meaning of the title is very much important. If you look at the title, it indicates once upon a time. It means that the writer, the poet, he is actually yearning for the past. He is actually dwelling in the past. He has become nostalgic. Now, what do you mean by nostalgic? Nostalgic means longing for the past. It means that you are remembering the past, you are recalling the past, and you are trying to understand that what type of behavior, what type of situation was prevalent in the past. यहाँ पर अगर आप देखें, I'll first talk about the poet itself. Poet Gabriel Okara actually is a Nigerian. He is a Nigerian poet. He was born in western Nigeria and he was one of those few poets who was not influenced by the western poets. मतलब कि जितने भी यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर में पोइट्स आए हैं उन्होंने इंस्पिरेशन ड्रॉ की है वेस्टर्न मॉडल से. मतलब कि अगर कोई पोइट है वो किसी दूसरे पोइट से इंस्पिरेशन लेता है, मुतासिर होता है और जो कुछ वो लिखता है उसमें आपको उसके असरात नजर आते हैं. लेकिन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन he was completely different. He has absolutely opposed the Western model. Gabriel Okara was not in favor of the Western model, rather he was against the onslaught of the African culture by the Western culture. For example, जो अफ्रीका में कल्चर था या अफ्रीका की जो सकाफत थी उसके ऊपर जो वेस्टर्नाइज एक मॉडल इम्पोज किया जा रहा था या इम्पोज हो चुका था उसके खिलाफ गैब्रियल ओकारा ने आवाज उठाई है. So in this poem we will see that what he has actually elaborated. First of all, I'll try to give you an insight into this poem that what he has tried to elaborate. He actually wanted to illuminate one of the most important aspect, and that was that man has become deceptive, man has become dual-faced, he has become double-faced, and he has now began to express डबल स्टैंडर्ड्स. मतलब कि इंसान की अब एक शक्ल नहीं होती बल्कि उसकी दो शक्लें हैं. बज़ाहिर वो कुछ और नजर आता है ज़ाहिरी तौर पर और उसका बातिन कुछ और होता है. अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, पिछले ज़माने के लोगों की तरफ चले जाएं, वहाँ पर लोग ईमानदार भी थे. जो उनके दिल में होता था वो उनकी ज़ुबान पे होता था. उन्होंने कभी भी दो चेहरे जाहिर नहीं किए बल्कि उनका जाहिर और बातिन एक होता था. बट नाउअडेज what we do, we show something else, but deep inside we are completely different people. So I will start reading the stanza and paraphrase the stanza in order to explain what actually writer wants to convey. So I would request you all to open page number 263. The very first stanza. Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes. Once upon a time, son. The writer is now addressing his son and he is expressing that once upon a time, एक दफा का जिक्र है, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes. मतलब कि लोग जब मुस्कुराते थे तो वो दिल से मुस्कुराते थे और उनकी आंखों से वो झलक साफ नजर आती थी. But now they only laugh with their teeth while their ice block cold eyes search behind my
shadow. Now they only laugh with their teeth. मतलब कि अब वो मुस्कुराते हैं लेकिन वो मुस्कुराहट सिर्फ उनके चेहरे पर नजर आती है, सिर्फ उनके मुंह पर नजर आती है, और डीप इनसाइड they are not laughing, rather they are expressing something else. They hold a completely different feeling in their hearts, and apparently their smile is different. After this, there was a time indeed they used to shake hands with their hearts, but that's gone, son. Now they shake hands without hearts, while their left hand search my empty pockets. Now, in the second stanza, if you look at the second stanza, there was a time indeed, एक वक्त ऐसा भी था जहां पर वो जब हाथ मिलाते थे तो दिल से मिलाते थे. अब वो जब हाथ मिलाते हैं तो क्यों मिलाते हैं? Because they want to search my pockets with their left hand. अगर आप देखें आजकल के ज़माने में या आजकल की जो हमारी एक सोसाइटी है, वहां पर अगर एक इंसान आपसे मिलता है तो उसका कोई ना कोई मतलब होता है. बिना मतलब के वो आपकी तरफ देखता भी नहीं है. ये उसी तरफ इशारा किया जा रहा है कि आजकल जब कोई आपसे हाथ मिलाता है तो उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि आप हैं क्या, आपका पेशा क्या है, आपके पास दौलत कितनी है और आप किसी के कितने काम आ सकते हैं. मतलब कि हमारा एक दूसरे के साथ मिलना भी किसी मकसद के लिए है. इसके अलावा हम एक दूसरे से मिलने से भी कासिद है, हम नहीं मिलते. This is the point that the writer is trying to explain, that today we have now abandoned this practice to greet people from heart. Rather, we are greeting each other because we want to compensate each other in one way or the other. So this is something that you need to understand regarding the second stanza, that we have even given up shaking hands for the purpose of greetings. Rather, if there is a particular, let's say, compensation or the expectation of anything else from the other person, only then I'll shake hands with him. So this is the point that the writer is trying to explain in the second stanza. If we switch our discussion to the third stanza, what does it indicate? Feel at home, come again, they say, and when I come again, feel at home, once, twice, there will be no thrice, for then I find doors shut on me. बड़ी एक कॉमन बात है आजकल के ज़माने में. फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी के घर जाते हैं और आप मेहमान बनकर जाते हैं तो वो फॉर दी हॉस्पिटैलिटी से एक फॉर्मेलिटी की बुनियाद पर कहते हैं कि ये आपका अपना घर है, यू कैन कम एनी टाइम. या आप अगर दूसरी दफा चले जाए तो दूसरी दफा भी आपको वेलकम करेंगे. लेकिन जब आप तीसरी दफा जाते हैं, द डोर्स विल बी शट. इट मींस देयर एटीट्यूड विल बी changed completely. Why? Because whenever they extend hospitality, that hospitality is just for the sake of fulfilling the formality. इसका मतलब यह कि वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आपको इस तरह की बात करते हैं कि यू कैन कम एनी टाइम, आपका अपना घर है, वरना दिल से वो कभी भी ये बात नहीं करेंगे. This is something that has become a norm, a custom in the society. Now if you look at these three stanzas, we can easily understand that we are actually following the Western model. अगर आप वेस्ट पे चले जाएं, मगरिब की तरफ चले जाएं, वहां पर भी मटेरियलिज्म की वजह से ये तमाम जो हमारी ग्रीटिंग्स हैं या जो इंसानी हमारे तकाजे हैं, इनको हमने अबैंडन कर दिया है. वही चीज अब यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस हो गई है. इसी तरह अफ्रीका के जगह में भी, कल्चर में भी ये जगह जो है इंट्रोड्यूस हो गया है. तो ये सारी चीजें क्या करती हैं? ये मुतासिर करती हैं हमारी इंडिजिनस कल्चर के नॉर्म्स को. फॉर एग्जांपल, जो हमारी सकाफत थी, जो हमारा कल्चर था, उस पर काफी गहरा असर पड़ चुका है बिकॉज ऑफ द इमिटेशन from the Eastern culture of the Western model. So all these different dimensions need to be understood. The fourth stanza. So I have learned many things, son. I have learned to wear many faces, like dresses, home face, office face, street face, host face, with all their conforming smiles, like a fixed portrait smile. अब यहाँ पर
writer Gabriel Okada is actually trying to explain to his son that like other people, he himself has assimilated in the culture and he has assumed different roles, many roles. मतलब एक पर्सोना कहते हैं कि आप किसी सिचुएशन के मुताबिक एक रोल एज्यूम करें. फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर मैं खड़ा हूं, सो माई पर्सोना इज ऑफ अ टीचर. घर जाता हूं, माई पर्सोना इज ऑफ अ सन, of a brother. Now, outside my house, I can be a friend. So, all are these different activities, all these different situations indicate my role in the society. तो यहाँ पर what he is trying to explain that he has learned to cover many faces. For example, office face, host face, home face. मतलब हर जगह पे सिचुएशन के मुताबिक एक चेहरा लिबादा ओढ़ना. दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. मैंने भी ये सीख लिया है कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा चेहरा दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना. सो दिस इज व्हाट, दिस इज डुअल स्टैंडर्ड, दिस इज डबल स्टैंडर्ड. इट्स अ डुअल फेस्ड activity. Now, what writer is trying to explain? He is trying to elaborate the concept with regard to his extreme criticism of the Western model that we have begun to imitate. हम वेस्टर्न मॉडल को इमिटेट कर रहे हैं और अपने जो इंडिजिनस हमारा जो मशरकी कल्चर है उससे आहिस्ता आहिस्ता दूर होते चले जा रहे हैं. और he was absolutely against the onslaught of the African culture by the Western culture, क्योंकि अफ्रीका में भी अंग्रेजों का राज रहा है. They themselves have been colonized for so many years by the Britishers. The next stanza, and I have learned to laugh only with my teeth and shake hands without my heart. और मैंने भी ये सीख लिया है कि मैं सिर्फ हंसूं अपने चेहरे के जरिए से. मतलब मेरा चेहरा तो हंस रहा है लेकिन मेरे बातिन में कोई और बात चल रही है, मेरे अंदर मेरे दिमाग में कोई और बात चल रही है, मेरे दिल में कोई और बात चल रही है, लेकिन बज़ाहिर मैं मुस्कुराहट दे रहा हूं. एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हार्ट. और मैं अगर किसी से हाथ भी मिला रहा हूं तो उसका मकसद ये नहीं कि मैं दिल से मिला रहा हूं, लेकिन मेरा कोई और मकसद है जिसकी वजह से मुझे हाथ मिलाना पड़ रहा है. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it's been nice talking to you after being bored. इसका मतलब कि मैंने ये भी सीख लिया है कि मैं गुड बाय कहूँ जिसका मतलब गुड बाय नहीं होता, इसका मतलब होता है गुड रिडंस. गुड रिडंस का मतलब होता है नेक शगुन. गुड रिडंस. Good riddance means good omen. नेक शगुन मतलब कि किसी शख्स को मैं कह रहा हूं कि आपके आने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज. इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसको दिल से अलविदा कर रहा हूं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा है कि ये जा रहा है यहां से. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव नाउ बिगन टू फील. दिस इज समथिंग दैट वी हैव imitated, copied from the Western culture. उसके बाद I have also learned to say glad to meet you without being glad. मतलब आपसे मिलके खुशी हुई. जब हम कहते हैं ना, वो हम दिल से नहीं कहते बल्कि बज़ाहिर कहते हैं. अलबत्ता हमें खुशी नहीं होती, लेकिन उस बंदे के सामने just to fulfill the formality हम कहते हैं that I am very pleased to meet you. उसके बाद and to say it's been nice talking to you after being bored. किसी शख्स को अगर हम कहते हैं कि आपके साथ बात करते हुए अच्छा लगा, तो वो दिल से नहीं कहते बल्कि ज़ाहिरी तौर पर सिर्फ उस बंदे को खुश करने के लिए कहते हैं. हम डीप इनसाइड वी आर एक्चुअली बोर्ड. हमें उस शख्स से बोरियत होती है, लेकिन बज़ाहिर उस शख्स को हम कहते हैं इट्स बीन अ नाइस वेंचर, इट्स बीन अ नाइस मीटिंग एंड इंटरेक्शन विद यू. Next stanza, but believe me son, I want to be what I used to be when I was like you. I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. अब यहां पर इस आखिरी स्टैंजा में, सेकंड लास्ट स्टैंजा में, राइटर अपने बेटे को मुखातिब होकर ये बात कर रहा है कि मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूं. जब
मैं तुम्हारी उम्र में था तो मुझे इन चीजों का बिल्कुल पता नहीं था. I want to unlearn all these muted. Muted का मतलब वो बात जो आपने जाहिर नहीं की, उन तमाम चीजों को मैं भूलना चाहता हूं और मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं. I want to be like you. But unfortunately, I have learned the art of deception. I can easily deceive people. I can easily show one face to the other and hide another from the others. So this is something that he wants to say. उसमें ये भी कह रहा है कि I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. Pointed hollow teeth. मतलब के सांप के जो दांत होते वो नजर तो नहीं आते, उसी तरह जब मैं हंसता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे दांत भी सांप की तरह है. क्यों? क्योंकि मेरे चेहरे पे कोई और मुस्कुराहट होती है लेकिन मेरे बातिन में बात बिल्कुल मुख्तलिफ होती है. This is something that the writer wants to convey, that we have assumed a double standard, and because of double standards the society is becoming corrupted. The African society was being derailed on the basis of that imitation from the Western culture, customs and models. Last stanza. So show me, son, how to laugh. Show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. अभी आखिर में क्या कह रहा है? अपने बेटे को मुखातिब होके कह रहा है कि so show me, मुझे दिखाओ क्या, how to laugh, कैसे हंसते हैं. मतलब हंसना तो उसको आता है लेकिन वो जानना चाह रहा है कि वो दिल से कैसे हंसा जाए. वो भूल चुका है. He has forgotten all these different norms of the indigenous local culture. Now what has happened to him, that after imitating the Western culture, he himself has forgotten his indigenous native culture. तो वो कहता है कि मुझे दिखाओ कि कैसे हंसा जाए. Show me how I used to laugh. मुझे ये बताओ कि जब मैं तुम्हारी उम्र में था मैं कैसे मुस्कुराता था, कैसे मेरी मुस्कुराहट दिल से होती थी, कैसे जब मैं हाथ मिलाता था तो मैं दिल से मिलाता था. And once upon a time I was like you. वही बात. The writer is becoming nostalgic when he looks at his son, when he gazes at his son, he remembers his past. He recalls his past memories, his childhood memories, and long for those memories. So this is all about the poem in which the writer is actually trying to elaborate the concept of realism, that how to be realistic, not having a double face or dual face. So I request you all in the end to go through this poem, read it, and in the next session, inshallah, we will elaborate the poem in detail. Till then, take care. Goodbye.